अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेट क्लिनिक। एक मर्तबा फिर आपके साथ आसिफ, मुदस्सिर और साइम एक नई एपिसोड के साथ हाजिर हैं। एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान हैज स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल इन द वर्ल्ड कप. As we stand, we have won both our games, the one against Netherlands, one against Sri Lanka. So आज के एपिसोड में हम इन दो गेम्स के बारे में बिग पिक्चर डिस्कशन करेंगे. What this means for Pakistan's campaign in the World Cup, what were the big picture positives and some concerns, some negatives which remain. And then we're going to transition to the other upcoming game now. So जब हम record ये कर रहे हैं, so in a couple of days we're going to have the game which, of course, the whole world is waiting for, is anticipating, is the Pakistan-India game. It's a big game. Having said that, it is one of the 9 games that we'll be playing. So उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, where do you see Pakistan, what are some of sort of the faults we need to cover to give ourselves the best chance of winning. आसिफ, आपसे स्टार्ट करते हैं इस दफा. Give us your feeling on the two games overall. क्या आपके sentiments हैं, क्या आपकी feelings हैं? How have these two games shaped your opinion on where we stand as a team in this World Cup? Yeah, Assalamu alaikum. Thank you. First, before I start, I want to give kudos to my two co-hosts because in the last few episodes, some things were said. Mudassir a few episodes ago talked about bringing Saud in, and we said, we like him, he's a good player, but how are they ever going to bring him in? And I don't know, it's very unusual for this management to just throw someone into the middle like that. Saud was a revelation against Holland, and he was very, very good against. He just looks like he belongs. Great job, and so good job from Mudassir. And then Saim, last time we said who is the one player that is most important. He said Rizwan. We all saw what Rizwan did. And of course, when we thought he was injured, we all held our collective breaths because we know we don't have a reserve keeper. And then, of course, he talked about bringing Abdullah Shafiq in, and we saw what a big difference that made. So congratulations to you guys. I'm just entertainment, but you guys, good job. So, Nate, so two things I want to bring up. If you remember coming into the World Cup, coming into the Asia Cup, this was a team that was flirting with being the number one team in the world. And if you had asked anybody where we were, where our strength was, how did we get to where we were, you'd say our bowling, but you'd also say our batting, the top three, Fakhr, Imam, and Babar. And a month ago, if you were to tell me that we played our first two World Cup matches, we scored 286, and then we chased 345, and in both of those matches, we had zero contribution from Babar, Fakhr, and Imam, I would ask you what you were smoking. I mean, it's completely out of the blue. So it's fascinating to see that we have found new ways to win. I think it's very fortuitous for Pakistan to have done this. So it's really, really nice to see. Having said that, there's a lot of excitement, and I get that, but I'm going to come back to what I said way in the beginning. Perspective. If you asked us a week ago and said, going into this India match, you have beaten Holland, you have beaten Sri Lanka, most of us would be like, okay, these are the matches we were supposed to win. So it's par for the course. It's not actually something to get overly excited about. Where the excitement comes from is the way that they won the Sri Lanka match, chasing 345, of course, the highest total. The highest total we chased before this in the World Cup was Inzamam ul Haq semifinal against New Zealand. This is very un-Pakistan-like, And while I do have problems with the way they chased and everything, they did a phenomenal job. And so, remember I kept talking about before, and one of the issues I've had is how we needed that little, flash of inspiration, something to get us going. And I think that 176-run partnership between Abdullah Shafiq and Rizwan did that. That showed the rest of the team that, Rizwan especially, you can, I'm on the floor, I can barely stand, and go back to the 99 World Cup. If that was Inzamam ul Haq, he'd say, bring the charpai, I'm going to go and sleep for 3 hours. Rizwan said, I'm going to stay there and I'm going to bat to the end. And that's what everyone else saw. And I think that has provided the spark that hopefully will take us forward. But again, remember, it's 2 matches that we were supposed to win. The next 2 matches will tell us a lot more about us, India and Australia, but we're where we want to be. So that's good. Right. इसमें जो आपने शुरू में इंट्रो में जो आपने बात की और हमें क्रेडिट दिया, मुझे भी और मुदस्सिर को, तो उसमें एक चीज ये चीज है कि इट स्पीक्स टू द काइंड ऑफ इनर्शिया जो कि हमारी अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन में और द वे वी डिसाइड अ प्लेइंग 11 के हम एक नए बंदे को बड़ी देर बाद चांस देते हैं, एंड वंस एक टीम एस्टैब्लिश हो जाती है तो फिर हम उसको ड्रॉप भी नहीं करते.
So we have talked about the fact in the last few episodes that one of our key strengths is that this is a settled team. But at the same time, while this is a pro, it has some It drawbacks as is, well. yeah. And one drawback being कि फिर अगर आउट ऑफ फॉर्म हैं भी प्लेयर्स तो हम एक नए बंदे को चांस नहीं देते. अब हमने दो नए बंदों को चांस दिया, साउथ को दिया. He grabbed the opportunity. He's established as the number 5 order batter, and then Abdullah Shafiq, of course. So it's unfortunate कि जो नया टैलेंट है उसको इस वजह से नहीं चांस देते कि भाई एक टीम चली आ. I think you can give them a little leeway here because it's not like पिछले साल जो middle order में किसी मैच में खुशदिल है, किसी मैच में आसिफ है, किसी मैच में हैदर अली है. These are guys who have been established for 3+ years. You know, I mean, again, we've talked about the record of Fakhr and Imam, so they had so much goodwill, put in so much work. I think it takes a lot to move them. I think it was still courageous to do. You know, they're more courageous than I was because I said persist with Fakhr. I'm happy to be wrong. I don't mind that because look, Abdullah's class is something that no one has ever doubted. And you can go back. I know I'm going long here, but you can go back to the Sri Lanka series a few years ago in the test match in Galle, I think it was, chasing 400 plus total. He scored 170 not out. Something I'll talk about a little later. This man puts a price on his wicket, and he has got class. Tika Jobia, he has the mind, he has the brain, he has the temperament to actually play a long innings. So it was, in my mind, it was never a question of whether Abdullah can play. It's just, does he displace Fakhr? And that's why my ideal 11, I had Abdullah and Fakhr and Imam all three in there. But you know, I think if it was a middle order issue, then it would be more on, you know, you could criticize it more because they took so long. But these openers have been established for a long time. I don't fault them for taking that long to do it, but they did it. I'm glad they did it, and you know, we'll see where we go from here. Very nice. मुदस्सिर, आप ऐड करना चाहोगे इसमें ओवरऑल बिग पिक्चर आपकी क्या टेक अवे है? The first two games, how do you see Pakistan after the first couple of rounds? Each team now has played 2 games. As we record this, the Australia versus South Africa game is the only game which is left, after which each team would have played 2 games. तो कहाँ आप देख रहे हैं पाकिस्तान को in the World Cup so far? And are you sort of overall satisfied? Are you excited? Yeah, you have concerns. नहीं, आई थिंक वो मेरे लिए तो ये वार्म अप्स थे अभी तक. जो फर्स्ट एक्सटेंडेड वार्म अप, अभी भी टीम अब जाके लगता है थोड़ा वार्म अप हुई है फाइनली. अगर दोनों गेमों में समथिंग वाज वेरी इंटरेस्टिंग के जैसे आसिफ भाई कह रहे थे कि मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम रहती थी. दोनों मैच में काफी सिमिलैरिटीज थी कि टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ अगेंस्ट इवन नेदरलैंड. दे वर लाइक 37 for 3. Yeah, 37 for 3. पुरानी टीम होती कोई तो लड़खड़ा जाती, 250 कर लेते टू सरवाइव. मगर वो सऊद ने और रिजवान ने जिस तरह खेला कि टीम पूरा निकाला. आई थिंक उस मैच में इफ्तिखार आउट हो गया, वरना दे कुड हैव स्कोर मोर क्योंकि ही व्हेन ही हिट्स स्ट्राइक रेट ऑफ 200, तो अच्छा स्कोर था 280. फिर सेकंड गेम में सबको पता है कि क्या हुआ है कि दो विकेटें गिर गई. इट वाज अ माउंटेन ऑफ रन्स. और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि पाकिस्तान ने छक्का नहीं मारा पावर प्ले में इस साल, but they still able to make the highest chase ever. तो बात वही थी कि वर्ल्ड कप में डायनामिक चेंज हो जाते हैं. वर्ल्ड कप में 350 इज नॉट अ बैड स्कोर. और हमारी टीम की जिस तरह शेप में भी और अभी कि दिस इज अ 325-350 बैटिंग लाइन इजी. तो ये आई थिंक दिस इज वेरी हार्टनिंग टू सी कि चारों मैच में दे लुक लाइक दे कैन कीप टचिंग 350, स्पेशली अगर स्टार्ट मिले. क्योंकि वो ऊपर प्रॉब्लम हो रहा है हम लोगों को, मगर ये कि वो भी कभी ना कभी तो रन करेंगे. बाबर इवन इमाम पे जितना भी क्रिटिसिज्म हो, मगर उसकी जो कंसिस्टेंसी थी एशिया कप से पहले नोबडी कैन डिनाई इट. मैं खुद इमाम का क्रिटिक था कि यार स्ट्राइक रेट का जो भी है, मगर ही वाज इम्प्रूविंग. अभी इसका थोड़ा स्लम चल रहा है एशिया कप से. So I think we will see hopefully more improvement as we go in the batting. The problem remains कि fielding में we still dropping important catches. इन विकेटों पे मैचेस में you cannot contain run. कोई भी रोक सकता. अगर कोई टीम 300 करती है, it's a good bowling. तो अगर आप कैच छोड़ दोगे तो that's where जिस तरह मेंडिस का कैच ड्रॉप हुआ, फिर मेंडिस मेड अस प्ले. Even the Australia versus India game,
I mean, had Kohli's catch Yes. been taken, things would have That was been very huge. different. हाँ It तो was huge, सबसे भी right? बड़ा क्रिटिसिज्म जो हो रहा है कि बॉलिंग खराब है, बैटिंग खराब है, मेरे ख्याल से सबसे जो पाकिस्तान जितनी ही मैच हारता है क्रूशल, जब इवन जो क्रंच मैचेस से लेके जो रिसेंट, वो फील्डिंग की वजह से हार रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछेगा सिर्फ अगर वो कैचेस पकड़े होते हैं जो हाफ चांसेस हैं और जो आसान कैच नहीं छोड़े होते तो काफी मैच पाकिस्तान हारता भी नहीं। Yeah, तो yeah. नहीं, ओवरऑल even सब going back to पॉजिटिव the Asia Cup, even going back to the Asia Cup, जो इफ्तिखार ने स्लिप में कैच छोड़ा था, नो वो सारे उसके याद है बाद से कैसे, इफ्तिखार के, और वहां से तो yeah, इंडिया वाज सो ऑन द बैक फुट। जब वो कैच छुटा है, इंडिया इज नाउ ऑन द टॉप अगेन, वरना उससे पहले yeah, पाकिस्तान बड़ा कॉन्फिडेंट था। उस right, कैच right, के right. बाद से वो पूरा डायनामिक ही चेंज हो गया इंडिया पाकिस्तान के यानी बाद। कैचेस जिस तरह आप इवन उससे पहले चले जाएं, जो आपको याद होगा 2011 वर्ल्ड कप में जो शोएब अख्तर की बॉलिंग पे वो टेलर का जो कैच था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और वो दोनों खड़े रह गए थे, आपका आई थिंक Scored इट a वाज यूनुस century. खान इन Yeah. स्लिप एंड देयर वाज कामरान अकमल, एंड देन दैट टर्निंग पॉइंट, उसके बाद से वो, सो Yeah. इट्स वेरी क्रिटिकल स्पेशली ऑन फ्लैट विकेट्स वेयर Exactly. इट्स डिफिकल्ट टू टेक गेट 10 विकेट्स आउट, half chances को भी आपको लेना पड़ता है, तो so that's something which hopefully our fielding coach is going to have a discussion, and I think part of that has to be, you have to be switched on. You can't take any team lightly. You have to give your 100%. You have to expect, मैं एक दो साउथ अफ्रीकन जो हैं फील्डर्स और प्लेयर्स उनको सुन रहा था, तो they were saying कि one of the key things is you anticipate कि इस वक्त मेरे पास ही बॉल आएगी, so every time you're switched on, yeah, this ball is coming to me. And of course, 99% of the time नहीं भी आएगी, but you have to have that mentality. अच्छा, इसमें बात कर लेते हैं ओवरऑल। एक तो जिस तरह आपने आइडेंटिफाई किया कि दिस इज अ बिग पॉजिटिव, वुड यू से कि जी हमने शो किया है कि बाबर आजम के बगैर भी वी हैव द स्ट्रेंथ टू पोस्ट गुड टोटल्स बोथ गेम्स। अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम से रन नहीं बने, एंड स्पेशली इन द सेकंड गेम, जिसमें लोग जब वो आउट हुआ है तो लोगों ने कहा कि अब तो नहीं हो सकता है, दिस वुड बी अ वर्ल्ड रिकॉर्ड चेज, बट so do you think this is a big positive for us, this confidence, and how would this affect Babar Azam going forward? Would that free him up knowing कि यार मेरे बाद भी लोग हैं, so I play my natural game, अगर आउट होता भी हूं तो कोई बात नहीं, I play aggressively, play my natural game, or would it now, the fact that he's had a couple of failures, make him more defensive and play on his mind? आपकी क्या इसमें टेक है? What's your prediction on this? मुदस्सिर? Yeah. I think it should give him some mental relief. वो ये नहीं है कि he should not think कि पूरी टीम मेरे ही ऊपर है, तो especially जो रिजवान ने जिस तरह कैरी किया है पिछले गेम में, तो psychologically should be a big boost for the whole team. Especially अब तो हमारे बॉडी लैंग्वेज देखो ना, जब एंड में रिजवान आया है, पुरानी टीम होती थी तो सॉरी इफ्तिखार आया एंड में, लग रहा था वो तो बस ऐसी किसी बच्चे ही वाज वॉकिंग इन द पार्क बेसिकली, कॉन्फिडेंस पहली उसने 3 चौके मारे, गेम ही खत्म कर दिया, तो द होल टीम गॉट बूस्टेड आई थिंक। और अब मिडिल जो ऑर्डर है हमारा फाइनली लुक वेरी कॉन्फिडेंट। सऊद की टेस्ट देखो, वनडे देखो, हमेशा ना उसने अंडर प्रेशर रन किए, दैट्स अ बिग डील के, और टेस्ट में भी उसकी एक आध इनिंग बहुत अच्छी थी। अब्दुल्ला का भी यही है यार, उसको एक गेम दिया एशिया कप में, ही स्कोर्ड। इट्स नॉट इजी के एक बंदा बाहर बैठा हुआ है, उसने रन भी नहीं किए हुए ओडीआई में, और आप वर्ल्ड कप खिला दो, और उसकी चांसलेस इनिंग थी यार, इट वाज परफेक्ट। सो अब्दुल्ला तो लुक्स लाइक समबडी फॉर लॉन्ग टर्म, तो बैटिंग वाइज वी गॉट एक्चुअली boosted. Now on that point, both Saud and Abdullah, ये दोनों बेसिकली टेस्ट क्रिकेट बैकग्राउंड से आए हैं। I mean, they've been known to be टेस्ट प्लेयर्स। सो एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि भाई वाइट बॉल के कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स लाइक मोहम्मद हारिस फॉर एग्जांपल हु आर अटैकिंग, एंड टेस्ट के डिफरेंट सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ प्लेयर्स होते हैं। बट इन दोनों ने दिखाया है कि इफ यू आर टेक्निकली करेक्ट, you have that potential, you have this value of accommodating players who are technically correct, who are solid, and they can sort of fine tune their game to be a little bit more aggressive, keep the scoreboard ticking. इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि do you really think कि ये दो different beasts हैं, या is there scope of considering in future good test batters and bringing them into the white ball circle? Absolutely. I think so. I think it's much more translatable in the 50 over format, not in the T20 format, because T20 format is a lot quicker. You don't have time to settle down. Look,
coming back to how we chased this, and of course we chased it, so it's great. I kind of still disagree with the template that we used. This was still the chase of the 90s that Pakistan did, in that they, consolidate their wickets, don't lose the wickets, just stay there at the wicket, and then once you get your eye in, play your dot balls. Once you get your eye in, then you can accelerate later. So it's predicated on the assumption that you're not going to get out. Rizwan had an amazing innings, but at a certain point he had 30 runs and 45 balls. Abdullah Shafiq, kind of the same thing. So, but there's enough time to make up for it. I do think that this template, the fact, and Mudassar referred to this earlier, and I'm not quite answering the question, that we don't make best use of the power play, which is designed to maximize, runs. We don't do that. And so while the approach worked, does that mean it's the best approach to use every time we have a chase like this? I don't know. I'm happy it worked. And I know it's Pakistan. They're never going to change it. This is the Pakistan way. But I guess the point I'm making is when you're chasing the way that Pakistan does, then having a solid technique like an Abdullah Shafiq does help, because their whole premise is conserve our wickets. And his first thing is he doesn't get out because he's got a solid technique. So I'd say I do think that's fine. If it was T20, I'd say totally different, because you don't have time to settle. You don't have time to play dot balls. In 50 overs, you do. Right. Achha, usme bhi to, I mean, they're extremes, right? Because on the other side, if you're too aggressive up front and you lose sort of 4 wickets in the power play, then the game is done essentially, right? Yeah. And on the other hand, I see your point कि भी अगर आप बहुत slow जा रहे हो, run rate का pressure इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर, so yeah, I mean, first karo, these guys were batting the way they were, and they were like, maybe by over 18 they were like 90 runs for 2. If these guys both get out, then the next guys who come in do not have the luxury of playing dot balls. They have to get set. Right. So it worked out, yes, and I'm thrilled that it worked out, but it puts a lot of pressure on the people coming afterwards. I guess if you're following this template, तो फिर ये है कि once you settle in, then you better you better go long distance. Absolutely. You better go, because then to expect a new person to come in and quickly start hitting, that would be really difficult. So it's a high risk. Exactly. I think the key जो है ना ODI में वो जो जैसे कोहली का भी सीक्रेट यही है और बाबर का भी यही है कि they don't play dot balls. उस दिन जब कैच छूटा था तो I think कोहली और KL राहुल took 97 singles. तो रिजवान और अब्दुल्ला ने भी यही किया. अगर आप ओवरऑल में मैच फॉलो कर रहा था तो रन रेट उन्होंने ज्यादा ऊपर नहीं जाने दिया. द रनिंग वाज गुड. प्रॉब्लम तो होती थी जब हमारे कुछ खिलाड़ी होते थे इन द पास्ट लाइक अहमद शहजाद. ही कीप्स ऑन जस्ट ब्लॉकिंग. एक चौका मार के ब्लॉक. रिजवान क्या करता है कि कम से कम ही कीप्स ट्राइंग टू टिक द स्कोर बोर्ड. और एक चौका. सऊद इसीलिए सो डेंजरस. अगर आप कभी देखना Saud's strength exactly. फिर कभी स्पिनर करा रहा हो बॉल, ही कीप्स टेकिंग सिंगल डबल सिंगल और ही गेट्स अ बैड बॉल एंड बूम एंड ही इज सो गुड लाइक ऑन द लाइक स्क्वायर ऑफ द विकेट. चौका. इसका स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर जा रहा है सऊद का. तो ये चीज इंप्रूवमेंट थोड़ी देखी है कि स्ट्राइक ये बहुत क्रूशियल है. अगर आप सिंगल भी ले रहे हो तो यू आर चेजिंग 300. So basically, आप low risk high return है ना आपका, कि आप risk को अपने minimize कर रहे हो. You're not sort of throwing your wicket, you're not slogging, but at the same time you're basically maintaining a healthy run rate. ये awareness चाहिए जो रिजवान में है, जो बिल्कुल ही मिडिल ऑर्डर में जिस तरह की बैटिंग होती है. सऊद में है, रिजवान में है. इफ्तिखार में थोड़ा प्रॉब्लम है कि स्पिन को he doesn't rotate. He can hit 366 to a spinner. He played a maiden over in the World Cup final. He cannot tap. वो आउट करने में वो उसको वर्ल्ड कप पे फाइनल में वो आउट ही हो गया था रोकने में. अगर वो घुमाता तो बारी फेंक देता उसको. इफ्तिखार में प्रॉब्लम हो रही है स्पिन में. मगर ये कि हाँ टेस्ट और वनडे, तो अगर आप इंडिया की बैटिंग देखो ना तो टेस्ट और वनडे के एक ही बैट्समैन है. सिवाय वो एक दो बंदे आते हैं टेस्ट में. क्या नाम है, पुजारा आता है. तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मेजॉरिटी ऑफ मॉडर्न डे टेस्ट बैट्समैन should be able to adapt easily in ODI, especially to the ODI. Completely different. T20 तो उसमें फिर people like Sky and others. Yeah, if you have 6 batsmen, 4 can come from test easy. That's my opinion. हमारा भी वही है. बाबर, इमाम, अब्दुल्ला शफीक, वही सऊद, हमारा भी वही टेम्पलेट बन गया तकरीबन. अच्छा चलें इसमें to keep our discussion going, we've talked about some positives, of course, batting and the fact that we are rotating strike, we're not overly dependent on Babar.
व्हाट अबाउट सम कंसर्न, स्पेशली आपने आइडेंटिफाई किया है फील्डिंग के अलावा बॉलिंग में? नाउ बॉलिंग के अंदर वी सीन दिस, हमारे जो दो वार्म अप गेम्स हुई हैं, और दो अगेन वार्म अप को हम बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले सकते, बट यहाँ पे भी श्रीलंका के अगेंस्ट जबरदस्त हुआ कि हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड चेज किया, बट देन अगेन सम पीपल आर सेइंग कि यार इतना रन करवाना चाहिए था हमें इन द फर्स्ट प्लेस और नॉट। सो इज दिस मेनली ड्यू टू द फैक्ट कि पिचेस इतनी फ्लैट हैं, या डू यू थिंक के बॉलिंग के अंदर भी हमें कुछ कंसर्न्स हैं, स्पेशली अप फ्रंट जो हम डिपेंडेंट रहे हैं शाहीन के ऊपर? शाहीन इज नॉट टेकिंग विकेट्स, थोड़ा स्लो लग रही है उसकी स्पेस। स्पिनर्स का तो हमने पहले भी बात की है पिछली एपिसोड्स में, स्पिनर्स जो हैं वो इतने पेनिट्रेटिव नहीं लग रहे। बॉलिंग के बारे में आई लाइक द टू ऑफ यू टू वेन एंड टॉक अबाउट वे डू यू सी अ बॉलिंग, और उसके अंदर कैसे हम इम्प्रूवमेंट ला सकते Look, bowling ka ye ke, it's hard to judge them on pitches like this. I mean, I would never want to be a bowler in this World Cup. I mean, the pitches are terrible. It's just a flat board there, and you're just serving it up for them to hit. Um, Shaheen ka, pace. I watched, later on in the second spell, he hit 140. I know people talk about his pace, and there's also this talk about that he might be bowling with an injured finger. I हैं? find his line has been off a lot. He's usually pinpoint accurate with the Yorker, or he'll shorten the length up a little bit and have it swinging. He's been bowling on the leg a lot, and that's been a feature that I've seen the last few matches, even going back to the Asia Cup. So he needs to tighten that up. And maybe that's an injured finger. I don't know. Spinners, I still think Shadab is just not up to the mark. I mean, the wicket he got in the second match was a That was a bad ball, gift, basically. and he was still bowling full tosses. One thing which Shadab, and I said earlier that we need to have a good Shadab of firing on all cylinders in order to win, because he is a great fielder, a batsman, all this stuff. But at the bottom line, at the end of the day, he's a bowler, and if he's not bowling well, if he's bowling, half trackers and full tosses, India will devour him. So that's a big issue. And then I know we'll talk about that later. So I'm a little concerned about that. I do think credit needs to be given to our bowlers, because look, halfway through at like 25, 26 overs, Sri Lanka had over 200 runs. They were going to score 500 almost, it looked like. And the bowlers pulled it back. Those last 10 overs, they gave up only 61 runs. That was the difference in the match. That made, they could have batted us out of the match if they scored 400. So very much. Or even 375, 380 भी बड़ा मुश्किल हो जाना. And Hassan Ali, people say, look, he is our seventh choice bowler. We are where we are, unfortunately. But the guy bowls well with the new ball. He is never lacking in effort. He's going to bowl as well as he can. Now, he's going to get hit. India ke khilaf kafi painti lagi, I think, probably. But he's going to give us what he can give us. We need to look to our stars. And that's where Shaheen comes in. That's where, I think I'm thinking more about Nawaz now than Shadab, because I just don't see Shadab turning this around. I think, if anything, India it could shatter his confidence. Right. So yeah, and then one thing I want to add, going back to what you said about Babar, I think he needs to score runs in order to be a confident captain. One of the big criticisms I have of everything that's been going on is the body language. When you're doing well, it's very easy to have good body language. But go back and look at what the body language was when we weren't doing well. When we were playing against, when Holland was chasing our target down and they looked pretty good, they had just 2 wickets down. Before Shadab took a wicket, I remember they threw the ball from the outfield, took the ball, threw it on the ground. You're the vice captain. You need to have some inspiration. You need to tell the guys, buck up, we can do this. Babar just stands there with this silly grin, schoolboy grin on his face, even against Sri Lanka. You've got to get the guys going. You've got to light a fire under them and say, look, we're in this. This is the World Cup. If they can score this, we can score this. I think Babar, when he's not scoring, feels a little less liberated to impose himself on everyone, and they all look up to him, so they follow his lead. So he needs to, again, very easy to have good body language when you're winning. We have a lot of tough matches coming up. There are going to be some bad times, and Babar has got to stand up and lead and show them that this is Pakistan. We can come back from the dead, but I have to show everyone. And so that's why I think runs are important for Babar. The body language has been very poor from our 2 guys, Babar and Shadab. Rizwan has been the example. He's the one who's shown us that, yes, we're going to do this no matter what. Right. No, hopefully with this, these 2 wins, थोड़ी confidence भी ज़्यादा आएगी. दस आप कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, bowling में यार देखो 4 गेम हो गए. ये कोई मजाक नहीं है. 2 warm ups थे और 4 games is a lot of games.
तो वार्म अप में अगर आप देखो उसामा वो वाज मोर कॉन्फिडेंट, वो उसकी बॉल में जिप था, फ्लाइट भी दे रहा था अगेंस्ट न्यूजीलैंड। दे ड्रॉप 2 कैचेस, तो ही टुक 2 विकेट्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड, सो ही कुड हैव टेकन 4 विकेट इजी। ऑस्ट्रेलिया वाले वार्म अप में भी आई थिंक ही वाज द लीस्ट इकोनॉमिकल, या उसने विकेट भी ली थी। तो उसामा लुक बेटर इन द वार्म अप्स। और शादाब यार, अगर फखर के पीछे लगे हुए हैं सब लोग यार, और लोग भी रन नहीं कर रहे थे, जो बिगेस्ट चेंज जो करनी थी टीम में वो शादाब को ड्रॉप करना था। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रहा है कि शादाब और नवाज के ना 10 ओवर कराने मुश्किल हो रहे हैं। मुश्किल है। और कभी वो, और मुझे नहीं पता ये क्या टॉस करते हैं हम लोग कि चाचा को 4 ओवर दे दो, किसी दिन नवाज को 4 ओवर दे देते हैं, और दोनों साथ ही नहीं कराते, दोनों अच्छी कराते हैं। जब आज भी, जब कल वाले मैच में लास्ट टाइम चाचा के अच्छे थे वो 4 ओवर्स, वाज लाइक बहुत कम, सबसे कम रन उसने दिए थे। हाँ, 5 runs हो गए। या तो नवाज को कैरी क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि ओवर इन दोनों के होते नहीं है। वन ऑप्शन इज टू ड्रॉप नवाज कंप्लीटली और प्ले आगा सलमान, क्योंकि रन वो नवाज जितने करेगा, एंड चाचा एंड आगा सलमान, इवन सऊद शकील बोल, मैंने उसकी बॉलिंग देखी नहीं है, ऑन पेपर ही डज बोल सम स्पिन। तो नवाज के ओवर ये इफ्तिखार और आगा आराम से करा सकते हैं। शादाब के ओवर भी नहीं खत्म हो रहे, तो आप उसामा को ट्राई कर सकते थे 2 मैचों में, आपके डायरेक्ट आप इंडिया के खिलाफ उसको खिला दोगे। और अब बाकी बात वही है ना कि हाँ आपने हाँ, नेदरलैंड के खिलाफ इंडिया चूंकि, का। आई वाज जस्ट सेइंग कि नेदरलैंड के खिलाफ ये चूंकि वी हैड अ बैटिंग कोलैप्स इन द मिडिल, एट द इन द फ्रंट एंड एंड देन मिडिल के अंदर भी, तो उसके बाद इन दोनों ने रेस्क्यू एक्ट किया था, नवाज और यस। शादाब ने, विद हाँ द बैट। मगर अब उसकी मगर वजह अगर से, उनकी बैटिंग की वजह से, ठीक द है, फैक्ट दैट देयर प्राइमरी रोल इज बॉलिंग, आई एग्री, बट फिर सही वही है। बात तो आ जाती है। अगर अगर आगा होता है उस दिन नवाज की, वो नहीं कर सकता था 20-30 रन। हाँ नहीं, उसको भी करना चाहिए था। अब एग्जैक्टली वही चीज है तो ना। मेरा अपने ख्याल है नवाज हैज अ रोल टू प्ले। अगर कोई जैसे चेन्नई की पिच होगी, स्पिन विकेट होगी, तो यू नीड अ फिंगर स्पिनर। तो Right. अगेन यू कैन नॉट जस्ट प्ले द कीप प्लेइंग द सेम टीम इन एवरी सिंगल गेम। पता नहीं, ये भी हम्म। एक लोगों की वीकनेस है बेसिकली। तो हाँ नहीं, वो तो नवाज ने, चेन्नई के अगेंस्ट तो आगा सलमान का बनता है, स्पेशली हाँ बिकॉज अफगानिस्तान के अगेंस्ट हम स्पिनिंग ट्रैक में वी या नीड प्लेयर्स हु आर, हाँ सो नहीं, उसको या मैं कहता कि नवाज को आप जिस मैच में 3 स्पिनर चाहिए, जिस पिच पे उस पे नवाज खेल सकता है शादाब के। नवाज फिर भी थोड़ी टर्न करेगा अगर बॉल ग्रिप होगी। शादाब तो आई एम सॉरी कि यार 4 गेम हो गए, आई थिंक वी आर जस्ट डिलेइंग द इनएविटेबल, ही विल गेट ड्रॉप लुक्स लाइक। हम्म। अच्छा चलें, अब ट्रांजिशन कर लेते हैं, हमने बात कर ली ओवरऑल ये गेम की। लेट्स टॉक अबाउट द इंडिया पाकिस्तान गेम। Obviously we're starting off as underdogs, there's no denying that. um, Having said that, अगर हम खुदा ना खास्ता ये पहली 2 गेम्स में से कोई हार जाते तो काफी मोराल हमारा डाउन होता। अब द फैक्ट दैट वी चेज्ड 345 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वर्ल्ड कप के अंदर, वो हमने सेट किया चेजिंग, तो थोड़ा सा मोराल हमारा इम्प्रूव होना चाहिए। वी शुड गो लिटिल बिट मोर कॉन्फिडेंटली। Where do you see, what do you see are chances, given the fact yes we are underdogs, and if we are to win, what is the best template, what needs to happen? कि आप bowlers के ऊपर they need to provide us those wickets, या it's just a matter of कि इंडिया जितने runs बनाता है तो our batting अब इतनी हमारी confidence मिल गया है कि we can do the same thing? What is the sort of the strategy which would give us the best chance of upsetting India in the next game? यार आई थिंक जो मेरा तो ख्याल है अगेंस्ट इंडिया, बैट फर्स्ट if they win the toss and minimum try to get as close to 350, of course कंजर्वेटिव स्टार्ट ले सकते हैं। अभी अभी जो इंडिया जो मैच हारता है या हम जो उनसे हारते हैं, उसमें वो जो पावर प्ले का जो प्रॉब्लम होता है, वहीं गेम थोड़ा बहुत वही शेप हो जाता है। जैसे इंडिया के जो हमने जितने भी गेम्स हराए हैं, उनमें एक है उनके शुरू में 2-3 विकेट अगर आउट, शाहीन ने जिससे आउट किए थे 1-2 2-3 मैचों में, या इसी तरह पाकिस्तान क्या है, अगर समहाउ दे सर्वाइव द पावर प्ले और विकेट ना दें, उसके बाद ना थोड़ी टेंशन कम हो जाती है। तो आई थिंक द रेस्ट वो टेम्पलेट होना चाहिए, जो मेरा ख्याल है बैट फर्स्ट, ट्राई टू गेट एज क्लोज टू 350, देन यू हैव टू फील्ड रियली गुड, और वी गोना नीड अर्ली विकेट्स। जिसमें फिर शाहीन का रोल आ जाता है, हसन अली को नीड्स टू चिप इन। और उसामा को जब आप फखर को बिठा के अब्दुल्ला को खिला सकते हो, तो टेक सम रिस्क एंड प्ले उसामा, In और place of who? In place of प्लेस Shadab? ऑफ शादाब।
जब आपने फखर को बिठा दिया, now you're open to everything. तो शादाब should not be holy. अगर although is it realistic for us to expect to get a lot of wickets on spin, because India typically play spin very well, right? They're human beings. Yeah. अगर okay, तो फिर शादाब को क्यों खिला रहे हैं हम वो गेम? अगर बॉलिंग नहीं कराएंगे अगर वो खेलेगा तो, क्योंकि you still minimum we gonna bowl 20 spin overs regardless ना. तो the best spinner seems like right now in form is Osama. उसकी he's tall, he might extract some bounce, उसमें है quality. I mean, again, it's tough to do it. मगर you have to think out of the box. Yeah, you have to think out of the box. This is not a knockout game. So we have to keep trying ना. तो मुझे डर है अगर नवाज और शादाब दोनों खेलेंगे तो ये खत्म करनी मुश्किल हो जाएंगे दोनों के अगेंस्ट इंडिया. राइट. आसिफ, आप कुछ ऐड करोगे इसमें कि हमारा बेस्ट चांस क्या है? Yeah, so first, I think the best thing for us is mental. You know, all the pressures on India. They're at home in this huge, crowd. They are already coronating themselves. They're having their opening ceremonies essentially here. They're calling all the stars and everything. This is like they've assumed they've won and they're already celebrating before. There's so much pressure on them to win. And honestly, with us having won our first two matches, this is not a match that we were saying we're putting in the win column. Yeah. So there's no pressure. Play free, play relaxed, enjoy yourselves. I think if they do that, we have a good chance. Look, the bottom line is on paper, India is a stronger team than we are. We have to be at our absolute best, and they have to be below their best for us to beat them. But if we're more relaxed and they're more tense, I think that's a big step. I agree. Look, India, they play spin well, but they're not, infallible. And I do think one thing that I would say, I agree. Shadab, I would drop him because A, he's not been performing well. B, India will destroy his confidence forever. They'll end his career, I think. I don't know much about Osama, but here's the thing. I don't think India knows much about him. And if they haven't seen him, he's a hybrid between like Ashwin and Kumble in the sense that, like Mudassir said, he's got height, he's got bounce, he turns a little bit, he can bat as well. Why not bring a little mystery aspect into it? It may give us a chance to have something happen. I still keep Nawaz in. Yeah. And then one more thing I would say in the openers, Abdullah, of course, has cemented his place. I do think that Imam, two things that bother me about Imam in this match. One is that his record against India is abysmal. His average is 7. He doesn't do well against them. What hurts me more about Imam, and I'm a big fan of Imam, he's been such a steady opener for us. He's one of the top-ranked batsmen in the world. You put a price on your wicket, right? In the match against Holland, we lost Fakhr and then we lost Babar. The new bowler came in, the very first ball, he tried to hit, pull it for 6. You have to put a price on your wicket. Even here in the next match, same shot. You've got to put a price. Look at Abdullah Shafiq. It was his first match. He scored 113. He got out. You would think, Chalo, I've done a big job. I'll hold my bat up and walk away. He looked like the world had ended. He looked so despondent and sad. I go back to in the 1990s when Brian Lara scored 277 against Australia and he got out. He was crying. So put a price on your wicket. Imam's not doing that. I would say throw Fakhr in and see what happens. तो अब्दुल्ला को तो वो कैच जो है स्पेक्टेकुलर कैच था, वरना तो जिस तरह वो जा रहा था, he would have carried kept going. He would have kept going. There are some, मैं हमेशा मेरे ओपिनियन ये होता है कि स्टैट्स ठीक हैं, मैटर करते हैं, मगर you are looking at the player too. तो अगेन वर्ल्ड कप से पहले we didn't want to disturb the pot, मगर कुछ प्लेयर होते हैं you put them in front of everybody else. वो कमी है यार. वो अब्दुल्ला जो क्वालिटी अभी तक नजर आती है टेस्ट में, the only thing he has to prove how he scores on a faster track of Australia or South Africa. वरना श्रीलंका में या जो एशियन कंडीशन में he's top class basically. तो ये सेम विद सऊद की जो इनिंग्स थी अंडर प्रेशर, तो ऐसे प्लेयर्स परमानेंट होने चाहिए. ऐसे प्लेयर नहीं खिलाने चाहिए इनको आप चांस दे ही जा रहे हो या उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग चल रही है. कुछ लोग अब तो इस वक्त तो नहीं है, पास में ज्यादा थी. तो अब्दुल्ला इज वन टू ही विल बी अ लॉन्ग नहीं, वही जो बात हम पहले भी जो मैंने बात की थी इनर्शिया की, कि वी हैव टू गेट अवे फ्रॉम दिस फैक्ट कि यार चला जा रहा है तो बस चलाए जाओ. तो उसमें देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू हैव टू एक्सपेरिमेंट एंड ड्राफ्ट इन फ्रेश प्लेयर्स, एंड देन as we've seen with both Saud and Abdullah, okay, they've really grabbed this opportunity. Chale, in the interest of time, we don't want to make this episode too long. Let's conclude with, I'll just ask you a question.
दोनों टीम्स की तरफ से फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट वन प्लेयर फ्रॉम आवर टीम who really has to have a good game for us to win against India, and at the same time, one Indian player that we have to be really careful of. एक एक प्लेयर जो है आप नेम कर लें. मेरे नजदीक लेट मी स्टार्ट ऑफ. आई थिंक शाहीन वुड बी क्रिटिकल. ही इज Oh, नॉट that हैड was अ गुड mine. स्टार्ट. अच्छा ये चले. Yeah, go ahead. तो शाहीन को मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि इफ ही डजंट टेक विकेट्स अप फ्रंट वी आर इन ट्रबल, राइट. Mhm. जो हमने 260 266 ऑड रन में जो फर्स्ट एशिया कप की गेम थी उसमें शाहीन हैड अ बिग रोल टू प्ले, एंड दैट्स गोइंग टू बी क्रिटिकल बिकॉज द लाइक्स ऑफ रोहित एंड लेटर ऑन कोहली अगर वो सेट हो गए तो बाद में बहुत मार पिट सकती है. सो होपफुली ही टर्न्स इट अराउंड. उसकी जो अगर फिंगर का मसला है उसको ठीक कर ले. बॉलर्स के लिए मेरे लिए कुलदीप यादव इज वन विच आई एम रियली कंसर्न अबाउट एज अ पाकिस्तानी फैन. ऑल्दो अभी अफगानिस्तान की गेम में उसने परफॉर्म नहीं किया, बट आर रिकॉर्ड अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन जो है अनऑर्थोडॉक्स जो है वो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर वो इतना अच्छा नहीं है. सो आई होप वी कम अप विद अ सॉलिड प्लान. बेशक अगर उसको थोड़ा सा हमें रिस्पेक्ट भी देना पड़े, वी ट्राई टू गो आफ्टर bowlers like Pandya for example. So these would be two players from my end. आप इसमें add कर लो one player from our side who we're really dependent on, who really needs to have an excellent game, or one player from their side that we need to counter or be wary of. ये कौन जाना चाहेगा? यार ये बस बड़ी I have something interesting here. Pakistan has won 19 ODIs in India and have lost 11. तो पाकिस्तान का जो विन लॉस रेशियो है इज बेस्ट इन द वर्ल्ड विद इन इंडिया. एक्सेप्शन जो होती है वो लास्ट 2 वर्ल्ड कप गेम्स थी. विराट कोहली के जो स्कोर है अगेंस्ट पाकिस्तान इन इंडिया इज 9-0-6 देन 9. सवाल का जवाब दो यार. No, no, I'm coming to, yeah, that's what I'm नहीं coming वो to. लेकिन उसके अंदर तो बहुत सारी पुरानी गेम्स की भी आप No, बात no, करें let ना, me, I haven't 2011 finished. 2012 की. आपने सवाल पूछा तो उसका जवाब ही दे रहा हूँ. राइट. So Virat averages 22 in 4 games. That means Pakistan can only beat India if they take early wickets. अब वो चाहे शाहीन से आए चाहे वो हसन से आए, I don't care. We need early wickets from bowling, and that's the only way we can win this game. तो फिर शाहीन और हसन का रोल होगा आपके लिए कि कोई अप फ्रंट, और उनका कोई एक प्लेयर जो है जो आई मीन ऑब्वियसली उनकी पूरी टीम ही खतरनाक है, बट एक प्लेयर अगर आप नेम करो कि यार इसको हमें काउंटर करना पड़ेगा या प्रेशर की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा इज अ वन मैन स्टैंडिंग विराट और कोई कोहली. सो कोहली जो है उसको होपफुली ही डजंट हैव अ गुड गेम अगेंस्ट अस. आसिफ आप कुछ ऐड करना चाहोगे? From India, I mean, look, obviously we have Pandya and Kohli are big guys, but I'm gonna go with Ravindra Jadeja. He's a left arm spinner. He has given us problems before. He's a good batsman. He is in many ways the glue person for that team. He, when he's going well, the whole team, he lifts up the whole team. And if you get him down, you keep him quiet. I think you keep a lot of the Indian team quiet. I hate when he gets decided because that means we're losing usually. So that's one person I would look out for. Hamari taraf se, I'm going to go back to Babar because look, if Fakhar was playing, I would say Fakhar as well, because India has, they don't look at us as rivals. They look at us as inferior and, we're just going to tuck them away. There are very few people who they are actually in awe of and have respect for. And one of them is Babar. If Babar can assert himself and show his dominance, A, it'll filter through to the rest of the team. B, it will, free him up to, be much more positive in his captaincy. And I think C, it makes India a little bit more, reserved because they have that respect and off, just like we have for Kohli. So I think Babar taking off will really make India take pause and say, "Ek second, this is a real match. This is a real player. He's the number one player in the world. We have to actually get our act together if we're going to win." So that would be a big statement. I don't know that he'll do it. I think he's under a lot of pressure, but for me, that's the big one. Yeah, नहीं, और especially जो भी past में games हुई हैं तो उसमें some people have branded this or called this battle between the two kings, right? Kohli from their side and Babar Azam, who is the real king? And unfortunately, जो recent जो हमारी clashes हुई हैं उसमें Kohli has performed, Babar Azam has not, right? And then that rubs off on his captaincy as well. So as a Pakistani fan, we hope he has a good day. He performs with the bat. Yeah. चलें जी, इसके साथ ही आपसे ज्यादा चाहेंगे अगेन पाकिस्तान इज ऑफ टू अ गुड स्टार्ट, ऑल्दो
it's not just about winning. We were saying we were expecting Pakistan to win. Alhamdulillah, they did. But especially जो second game के अंदर we are excited जिस तरीके से उन्होंने एक चेज किया है वर्ल्ड रिकॉर्ड, और जो हमारे नए प्लेयर्स जो ड्राफ्ट हुए हैं, the inclusion of Saud Shakil, the inclusion of Abdullah, and how they've grabbed the opportunity. So that gives us sort of confidence, that gives us motivation. Hopefully that has lifted the spirits of our team as well, because after the loss to India in the Asia Cup, they've had a string of sort of disappointments. First against Sri Lanka in the Asia Cup, their warm-up games भी अच्छी नहीं हुई. So we were waiting and hoping कि वापस थोड़ी हमारी मोरल हाई हो, पाकिस्तान टेक ऑफ करे. So it's been a good start, but जिस तरह आसिफ अभी कह रहे थे कि we have to look at the bigger picture, the perspective, things have just started. So now, the fun begins. We have, tougher competition. आप आसिफ कुछ ऐड कर रहे थे इसमें? Just one thing, just looking at where we were, and our next two matches are Australia and India. India and Australia. So we need to keep our eye on the target, which is the semifinals. For me, I want to win one of those matches. If we get both, alhamdulillah, that's great. Ideally, we did not count either of those matches in our win column when we were putting together our formula to the semifinals. So we should go in free, relax, and say, get one of these two matches. You get one of those two matches, we are in the driver's seat, and because imagine if we lose these two and go in against Afghanistan, who we historically have struggled against, that's going to be a very tense match. So you really want to win one of these two going into that Afghanistan match, win that Afghanistan match, and boom, then we're on our way. And if you lose, don't lose by a huge margin, right? Because net run rate की भी बात आ जाती है. Even if it's boring viewings, play out the 50 overs. Yes. Exactly. चलें जी, इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे. Hopefully, by the next episode we have, more good news to share and, a more positive outlook for Pakistan. इसके साथ ही इजाजत चाहेंगे. आसिफ, मुदस्सिर और साइम. पाकिस्तान जिंदाबाद.